मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं अपने छात्रों के स्वास्थ्य के व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ चर्चा होनी चाहिए। मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं अपने छात्रों के बारे में, उनके मानसिक समस्याओं के बारे में और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हम देखते रहे हैं पिछले दिनों उनके मानसिक तनाव, उनकी परीक्षाओं की तकलीफें, उनमें डिप्रेशन की तकलीफ, आत्महत्या की प्रवृत्तियां, ये सारी बातें जो कुल मिलाकर एक तनाव का वातावरण उनके जीवन में महसूस जो उत्पन्न करती हैं। उसके लिए जो रास्ते चुने जा सकते हैं, उनके निराकरण के लिए क्या किया जा सकता है, ये कार्यक्रम लेकर हम सामने आते हैं। और कार्यक्रम का नाम है मानसिक शक्ति। मानसिक शक्ति वो इज दैट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर मेंटल हेल्थ development of students in the universities and colleges, which has the envisaged three important aspects of life. One, to do something to prevent all possible mental health related problems. Number two, to do something to find out what are the hidden potential in a student and recognize, try to find ways and means how to evolve that character. And the last, find out ways and means what best can be done to promote positive mental health and build psychological virtues in a student so that he can be successful man, can be happy man, can live with dignity, can live without psychological difficulties, but can use the principles of mental health to further the good part of his life, the positive wisdom in his life. In that connection, when we move forward, we recognize that mental health education is an important instrument for change. मानसिक स्वास्थ्य के बारे में दी जाने वाली शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस शिक्षा के द्वारा हम प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। अधिक एक्सपर्ट्स, उनकी जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट इसकी नितांत आवश्यकता है। ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए सतत, हमेशा। जब कोई चाहे कि उसे कुछ ट्रेनिंग, कुछ कोर्सेज की आवश्यकता है, तो वो उसे उसके सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारा ये प्रयास है कि हम अनेक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा कोर्स इस तरह से शुरू कराएं कि वो प्रतिदिन किसी न किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन अवेलेबल हो। जब भी कोई अध्यापक हो या स्टूडेंट हो या कोई पेरेंट हो, उसके बारे में उसे ओरिएंटेशन चाहिए या कोई डेडिकेटेड पीस ऑफ नॉलेज चाहिए या कोई और शिक्षा प्राप्त करनी हो, तो वो उसे उपलब्ध हो। मैं समझता हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और मुझे इसमें सफलता मिलेगी। और अगर ये काम हो गया तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा, it will be a great asset to have the foundation of logistics for delivery of mental health education to all stakeholders to prevent suicide in life of students. So coming back to the content and curriculum of mental health education, I was giving a brief outline in the previous video. Now let us see, when we say that we want to develop a comprehensive teachers training program of 8 weeks duration. So the first question arises, why do we need to train the teachers? And the straightforward answer is,
अध्यापक जो हैं, जो शिक्षक हैं, उनका जो स्थान है हमारे जीवन में, वो सर्वोपरि है। वो पहले वे व्यक्ति हैं जो हमें ये बताते हैं, ये एहसास कराते हैं कि हम कुछ सीख भी सकते हैं। वही हमें बताते हैं कि दाहिना क्या है, बायां क्या है, पिछला क्या है, अगला क्या है, दिन कौन सा है, समय क्या है। इन छोटी छोटी बातों से जो शिक्षा मिलती है, उस पर हम अपने ज्ञान का संसार खड़ा करते हैं। हमें अध्यापकों के, आचार्यों की आवश्यकता सही ज्ञान के लिए तो है ही, लेकिन सही ज्ञान की पहचान करने के लिए उससे भी अधिक आवश्यकता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है, और ये हमें मिलता है when we have our concepts clear। इसलिए शिक्षक का स्थान, चाहे पहली शिक्षक हमारी माँ हो और दूसरी शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, तो वहां से ये यात्रा शुरू होती है सीखने की, पढ़ाने की। In the process of learning and teaching exercise, we reform, we evolve, we acquire knowledge, skill। और ये करते हुए एक हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारा मस्तिष्क क्या है, हमारा मस्तिष्क हमारे जीवन को किस तरह रेगुलेट करता है, हाउ आवर ब्रेन एंड माइंड टुगेदर, how does it regulate our life. So we have the course for comprehensive program for training of teachers in mental health. Now we may do it in 8 weeks. Some institutions can do it in 16 weeks. It depends how much time how many hours they want to dedicate. But general content would be to understand what is the mental mechanism, what is the mental mechanism involved in development of abnormal psychological states, abnormal psychological behavior, abnormal thought processes. So we first need to understand a little bit of fundamentals science, and then we would involve with exercise, live exercise, to talk to people who developed difficulties or mental health aberrations, mental health challenges, and we'll try to explain how the problems can be sorted out. We will discuss how to recognize somebody who is as a potential threat, as a potential difficulty, or he or she may attempt self-harm. कैसे पहचाने उन लोगों को जिन्हें आत्महत्या के विचार आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, the research shows about 10% of students at any given time are struggling with suicidal thoughts and ideas. So these are the content of teachers training program, in which it is clearly outlined the theoretical construct, the practical workbook based exercise, listening to people who have undergone a crisis situation, and analyzing the content, the pathway, how to recognize the risk factors, how to understand what might be the cause behind it, and practice different kind of interventions. What, like how to provide help if somebody is talking about suicide, like what to do if somebody has been treated with depression and is re-entering the college. It's a great responsibility of the teachers and the fellow students to welcome that person and let that person not be isolated due to stigma.
and how to reintegrate his life into new school program, new curriculum. So these are some of the challenges which we have to think, and all teaching institutions should develop a special program for their students. It is only when you have respect for people who have suffered, it is only then your program would be empathetic, will be respected.